So we ended our lecture with the law of conservation of energy, which explained to us that energy cannot be created nor be destroyed. We can only convert them from one form to an other. ठीक है? In context to that, I discussed that whatever the energy of the object is at the beginning, it would be completely converted into the other form of energy if no frictional effects are present. One form of energy will be converted to another form of energy completely if no frictional effects are present. This was the formula of kinetic energy, which is 1 by 2 mv square. And this was the formula for potential energy, gravitational potential energy, which was mg and h. Since no energy is being wasted, so if the object had kinetic energy at the start, which was 1 over 2 mv square, it would be completely converted to potential energy. Okay? Now, using this formula, we can calculate the velocity of the object or height of the object. ठीक है? अगर हमें height calculate करना है तो mass of the object तो during motion change नहीं होगा, mass cancel out हो जाएगा. We will be left with 1 by 2 v square on one side and gh on the other side. अब अगर मुझे h calculate करना है, I will take this g to the other side. It would be v square over 2g. And if I have to calculate v, I would take this 2 to this side. This would be v square is equals to 2gh, where v is equals to under root gh, 2gh, sorry. 2 is a numeric value, g is a fixed constant, h would be the height of the object. So, to sum it up, whenever we discuss about the energies, we need to know कि energies हमारे पास क्या हैं? They are scalar in nature. They have a unit of joule, and joule is equals to kilogram meter square per second square और न्यूटन मीटर. कल हमने सब किया था, इनकी डेरिवेशंस भी किए थे प्रीवियस लेक्चर. नेक्स्ट थिंग, हमें सब फॉर्म ऑफ एनर्जीज की डेफिनेशन आनी चाहिए. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की सब टाइप्स कौन कौन सी हैं. कैन एनीवन टेल मी द सब टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? Ayan, could you tell the subtypes of potential energies? Elastic potential energy, gravitational potential energy, and Chemical potential energy. केमिकल ठीक है. पोटेंशियल. अब केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉर्मली उनकी एग्जांपल में क्या आ जाता था? फूड और बैटरी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास क्या आता है? कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग. ठीक है. और तीसरे वाले में हमारे पास क्या आता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता था? इट इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक हो गया. न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी क्या था? हमने कल फिशन और फ्यूजन पढ़ा था. डू वी हैव एनी कंफ्यूजन इन फिशन एंड फ्यूजन? No. So nuclear potential energy भी नहीं, gravitational. न्यूक्लियर इट्स नॉट न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, इट्स ओनली न्यूक्लियर एनर्जी. Okay. It's not potential energy. Nuclear is further divided into fission and फ्यूजन. ठीक है. फिशन हमारे पास क्या होता था? फिशन वाज कि जब A big nucleus divides into हाँ two small ones. एक बिगर न्यूक्लियस स्प्लिट अप होके टू स्मॉलर न्यूक्लियस में जा रहा है,
This breaking of bigger nuclei into smaller nuclei is known as nuclear fission. Nuclear अच्छा, fusion हमारे पास क्या था कि when two smaller nuclei combine together to give a bigger nucleus. one ठीक है, that was fusion. Fused से याद कर लेना, fused का मतलब क्या होता है, combined together. compound. ओके, फिशन के केस में फ्यूल क्या था अहमद? फिशन में हमने फ्यूल किसको डिस्कस किया था? What was the fuel of Fission and fission reaction? It was uranium. uranium, फिशन कहाँ पे uranium, होता है हमारे पास? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. nuclear energy. फ्यूजन कहाँ पे होता है हमारे पास? इट ओनली अकर्स इन सन. सन के अलावा दैट्स नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ अब अभी तक, क्योंकि we do not have that temperature and pressure to combine two nuclei. हमारे पास वो दो न्यूक्लियस थे किसके? हाइड्रोजन के, Mm, and जो कंबाइन होके क्या बना रहे थे? हीलियम 4 and 2, और साथ में एक क्या दे रहे थे? न्यूट्रॉन. मैं ये टेम्परेरी पॉइंटर से इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ये सब कुछ हम ऊपर कर चुके हैं मैं ऑलरेडी. मैं सिर्फ एक रिवीजन के वे में आपको, ठीक है. ये सेंकी डायग्राम्स बेसिकली क्या होती हैं? इट शोज यू द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म्स. तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके, oh, yes. देन आप ये वर्कर की एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं. केमिकल एनर्जी स्टोर ऑफ द इजिप्शियन वर्कर has been utilized in increasing the gravitational potential energy store of the block and increased internal energy of the surrounding. अब internal energy of the surrounding के increase का meaning मैंने कल भी आपको बताया था. Whenever something is converted into thermal energy, it means it has become the, मतलब if it's not something that is the So basically, output that it's not, if it's not the output that we require. For example, oh, whenever we're doing any work, ठीक है, our body gets heated up. That heating up of the body is something which is wasting our energy. ठीक है, we are not using that energy into our everyday routine. So that thermal energy which our body is producing while doing work become the part of the surrounding. And whenever we have discussed tomorrow that temperature has a direct relationship with internal energy. Internal energy को हमने कैसे define किया था? It is the sum of all forms of energy that a system possess. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक गैस, एक सिलेंडर लेता हूं, आई हैव गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट. ठीक है, अब इनके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? लेट मी ड्रॉ इट विद दिस. दे आर इन अ continuous state of motion according to kinetic particle theory studied in your previous classes. तो इनके पास kinetic एनर्जी तो होगी. Do they have potential energy? Gravitational potential. How would we justify the presence of gravitational potential energy? हमने क्या डिस्कस किया था? again. GPE. अब obviously GP. they must have some position in the container, Yeah. और वो position continuously change हो रही है. If that position is continuously changing, तो उसकी gravitational potential energy भी क्या हो रहा होगा? Change हो रहा होगा. Mm. ठीक है, so this sum of kinetic energy and potential energy, or if the system has any other forms of energies as well, is known as the internal energy. ठीक है,
अब इस इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप थर्मल एनर्जी के साथ होता है। एंड व्हाई इज दैट? क्लियरली, जब आई विल गिव हीट टू दिस सिस्टम, दिस हीट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय दीज पार्टिकल्स, और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। They will move When their faster. kinetic energy would increase, they would go further apart from each other and they would collide with the walls more often. ठीक है? So in turn, GPE would increase. So overall system की internal energy क्या करेगी? Increase करेगी because both of the factors are increasing. ठीक है? The very last topic of this chapter is efficiency. What comes to your mind when we discuss about efficiency? Hmm? What? Efficiency. Have you heard? Are you familiar with this term? Efficiency is like how How good efficient a something is system being done. is, हाँ, how good, how efficient, how productive a system is. ठीक है? Efficiency is defined as useful output over input. We have to focus on this useful output thing. ठीक है? Over input into 100% efficiency. Now, whenever we give an input to a circuit, does it completely converts to output? No. A part of it converts into waste energy. And which Yeah. energy we called a waste energy? Which is something that we are Thermal. that which is not No. required. ठीक है? Okay. So this output we use in the numerator, this input we use in the denominator. So if someone asks us to calculate, they give us that there is a total of efficiency का यहाँ पे होगा 100 joule of energy. Yeah. ठीक है? How if There is a 70%, 25 70 joule of would energy, out of which only 15 is converted into light, rest of it is converted into waste energy. So efficiency would be defined as useful output इसमें से कौन सा है 10 और 15 15. और टोटल इनपुट कितना था 25. 25 5. मल्टीप्लाई बाय 100. सिमिलरली अब इनपुट कितना है Percentage. 100 जूल, आउट ऑफ दैट ओनली 15 इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, तो उसका एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन द सेम थिंग, 15. यूजफुल आउटपुट न्यूमरेटर में, टोटल इनपुट डिनोमिनेटर में, इनटू 100. Which would be more efficient, the top one or the bottom one? The top. Clearly, it would be Top one. one. So it would be 15%. और ये कितना हो जाएगा 25 5 सा 25. और 5. 15 ये 60 75%. होगा. 60 हो 75 जाएगा. बनेगा 75 बनेगा 60%. 60%. Which is more efficient? Oh, नहीं sir, 75. देखा मैं ठीक कर रहा हूँ। Sir, 15 divided by 25.6 हुआ ना, times 160. अच्छा Sir, 25 4 हो जाएगा ना, 100 4 होगा. सॉरी 4. 5 नहीं. चलो थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है, मेरा मेंटल मैथ्स नहीं है अच्छा. So, do we get the meaning of efficiency? That efficiency is defined as useful output over input. So, if someone gives us input energy and output energy and demands finding waste energy, तो हम क्या करेंगे? Input minus output is equals to waste energy. Okay? अब यही वो बात उसने डिस्कस की है. Try not to mix stores and transfer ऑन द सेंकी डायग्राम. सेंकी डायग्राम्स में हम लोग सिर्फ कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज पढ़ रहे होते हैं, और जो हमने फ्लो डायग्राम स्टार्ट में पढ़ी थी उनमें हम एनर्जी स्टोर्स एंड ट्रांसफर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं. दे बोथ आर डिफरेंट. There is a formula for efficiency
And here are the examples that we just discussed. यहाँ से gravitational potential energy को discuss किया हुआ है, that it depends on two factor, which is weight and height, which is mgh. So the potential energy would increase if the height of the object would increase. Kinetic energy का dependency किस पे होती है? Mass and velocity के ऊपर. The greater the mass, the greater would be kinetic energy. The greater the velocity, double the kinetic energy would, because velocity का स्केयर आ रहा है हमारे पास. ठीक है. So अगर वो हमसे क्वेश्चन देता है, if kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square, what would happen if mass is doubled and what would happen if velocity is doubled? It would increase. ठीक है. अगर हम mass डबल कर देंगे तो 1 by 2 2m into v square, 2 को कॉमन ले लिया, 1 by 2 mv square. ये किसकी इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के. सो न्यू काइनेटिक एनर्जी वुड बी डबल द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अगर हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो वेलोसिटी की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 2v. इट वुड बिकम 4v स्क्वायर. 4 कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? 1 by 2 mv स्क्वायर. सो 4 times काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा if velocity is doubled. Do you get the relation? Yeah. तो अगर हम जस्ट मास को डबल करेंगे तो हमने 2m लिख देना है, 2 को कॉमन ले लिया, 1 by 2 mv स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी. इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, सो उसकी जगह पे 2v आ जाएगा, एंड व्हेन वी टेक स्क्वायर ऑफ दैट, सो इट वुड बिकम 4v स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी वुड बी 4 times the original kinetic energy. यहाँ पे उसने विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ डिस्कस किया हुआ है कि वेलोसिटी इज डबल, काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, मतलब स्केयर ऑफ दैट फैक्टर इंक्रीज होगा मास में इन कॉन्टेक्स्ट टू दी, मतलब मास में सिंपली डबल ट्रिपल. अगर मास डबल हो गया, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी. वेलोसिटी डबल, सॉरी ट्रिपल, मास को 3 times इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी 3 times इंक्रीज हो जाएगी. सो फोर्थ एंड सो ऑन. Do we have any confusion up till here what we discussed? Do we have any question up till here? No. Oh. Okay. Go on and read the chapter now.